So if you remember, we did the curvilinear coordinates कैसे XYZ system को in terms of we can write U1, U2, U3. Then we are trying to see now कि क्या-क्या changes आएंगी system में अगर हम if we write the system in terms of U1, U2, U3. So what we have now, we have U1 is some function of x1, y1, z1, U2 is some function of x, y, z, and U3 is some function of x, y, z. Similarly, we can have x as some function of U1, U2, U3, y is some function of U1, U2, U3, and z is some function of U1, U2, U3. And using this, we had tried to look about the tangent. So tangent in the direction of U1 is nothing but the rate of change of this r with respect to U1. Similarly, tangent with respect to U2, tangent with respect to U3. And we know for orthogonal coordinates, this curvilinear system will be, so we had curves. So this is curves, this is curves, these are three curves. So when I'm saying orthogonal system means their tangents, they are at any point, the tangents, they are perpendicular to each other. So it means del r by del u1 dot del r by del u2 is 0, and similarly the other through, right? And then this notation you will remember, right? So we have tried, so the tangent vector is del r by del u1, but हम जब direction की बात करते हैं तो हम unit tangent की बात करते हैं. So अगर हम इसको इसके magnitude से divide कर दें, so del r by del u1 over magnitude of u1. So this is the direction vector. So that is E1 cap. E1 cap is same as I cap. So अब x की जगह u1 है, y की जगह u2 है, और z की जगह u3 है. तो I cap की जगह E1 cap, इस इधर E2 cap, इधर E3 cap. So E1 cap is nothing but position vector derivative with respect to U1 over the magnitude of this vector. And just from naming point of view, we have called this vector as H1 vector. So what we get, del r by del U1 is nothing but H1 into E1 cap. Similarly, del r by del u2 is h2 into e2 cap, and del r by del u3 is h3 into e3 cap. अब जैसे हमने ग्रेडियंट टेंजेंट की बात करी, वी कैन टॉक अबाउट द नॉर्मल. और अगर आपको याद हो, किसी भी सरफेस का नॉर्मल इज नथिंग बट इट्स ग्रेडियंट. So you see gradient of u1. So gradient of u1 is nothing but normal to u1. And अगर मुझे यूनिट नॉर्मल की बात करनी है तो हम इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे. So this is known as, so this is a unit vector along the normal, and it is denoted by capital E1 cap. So small E1 cap is the tangent vector, capital E1 cap is the normal vector along U1. Similarly, we will have the normal vector along U2. So gradient of U2 over magnitude of gradient of U2. Again, gradient of U3, this is U3 over magnitude of U3. So this is E3 cap. So we have the small E1, capital E1, and small e2, capital E2, and so on. So in general, अगर मेरा कोई भी वेक्टर है A, so हमें जैसे हम अभी in XYZ coordinates हम वेक्टर A को कैसे लिखते हैं, sum A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Similarly यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब या तो हम उसको लिख सकते हैं E1 I cap, E2 cap, A3 into E3 cap. और अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल लिखना है तो व्हाट आई विल डू, A1 E1 कैप कैपिटल प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप. सो जैसा रूल आपका वहां था, एवरीथिंग इज सेम हियर. जैसे आपके पास वहां था, हमें पता है आई डॉट जे कितना होता है. व्हाट इज आई डॉट जे? J cap. J cap. I dot I is 1, right? I dot I is 1. I dot J is 0 because they are perpendicular. ऐसे यहाँ पे था I J K. सेम यहाँ पे हमारे पास E1 E2 E3. So E1 dot E2. So E1 dot E2. This will be 0 because they are perpendicular. So E2 dot E3. This will be 0. E3 dot E1. This will be 0. Then magnitude of E1 square. They are unit vectors. They are all unit vectors, right? Their magnitude is 1. E1 dot E1 is 1. All those rules, जैसे हम I cross J करते थे, K है, J cross K is I, K cross I is J. Similarly here, E1 cross E2 is E3, E2 cross E3 is E1, and so on, right? So all the things, same results will be those with the set E1 cap, E2 cap, E3 cap. Is it fine?
Is it fine? Yes, ma'am. Right? Okay, so now let us try to find the other things. Let us try to find the other small observations, right? If u1, u2, u3 are orthogonal curvilinear coordinates, then del r by del u1, del r by del u2, del r by del u3, and del u1, del u2, del u3, they are reciprocal system of vectors. So if you remember reciprocal system of vectors, basically reciprocal system is nothing but where you have, say suppose you say I have two vectors A and B. So say I have three sets. This is vector A, vector B, vector C, and then we have vector E, F, G. So reciprocal system is nothing but the dot product of these vectors. So A dot E, A dot F, A dot G, B dot E, B dot F, B dot G, C dot E, C dot F, C dot G, they all should be zero, right? And their magnitude A dot A, B dot B, C dot C, E dot E, so they all should be one. Same जैसे हमारा IJ के system में होता है, right? So all we have seen, then we have seen agar A is, so if we have two reciprocal, A is the reciprocal system. So suppose this is E, so E vector is nothing but B cross C over scalar triple product of ABC, right? This is how we find the reciprocal system. So first we have to prove that they are reciprocal system of vectors, right? So हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए del r by del u1, del r by del u2, del r by del u3 and the variants. So we know r is what? xi cap plus yj cap plus zk cap. अब since हमें u1 में जाना है तो x is some function, so psi1 of u1 u2 u3, psi2 u1 u2 u3 and psi3 u1 u2 u3. This is k cap, right? अब हमें पता है अगर मैं r का टोटल डेरिवेटिव ले लूं तो dr कितना हो जाएगा? dr will be del r by del u1 into du1, right? यहाँ प्लीज i cap आएगा, you will have i cap here, i cap, then del r by del u2 du2 j cap, del r by del u3 du3 k cap. Is it fine बच्चे? Yes, ma'am. Right, अब हमें ये शो करना है कि they are what you call it as reciprocal system. So basically we will show that their dot product is zero, right? So you see, let us first find del u1 dot dr, del u1 dot dr. So you see this is dr, and we know del u1 कितना हो जाएगा? Gradient of this u1, right? अब अगर हम इनका dot product लेंगे तो हमें पता है gradient is a vector. This will be which quantity? This will be a vector quantity. तो जब हम I लेंगे तो what will happen, right? The I components will go. So in general what you will have, beta, what you will have in general क्या हो जाएगा मेरे पास जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे? क्या हो जाएगा बेटा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? हाँ जी, बेटा आवाज आ रही है मेरी? बेटा is the question clear? What I am asking, is the question clear? बेटा क्वेश्चन क्लियर है सबको? What I am asking? Yes, ma'am. My question is, if first upon let us elaborate this term. What will be this? Del u1 dot dr. Let us try to find this. Del u1 क्या होता है बेटा? What is del u1? What will be del u1? हाँ, Del u1 by del x I cap. हाँ. See, this will be del u1 by del x I cap plus del u1 by del y j cap plus del u1 by del z k cap. Yes. What is dr vector? In general, what is dr vector? dr is nothing. R vector हमें पता है r क्या होता है? R is x I cap plus y j cap plus z k cap. So you see, अगर मैं dr निकालूं तो dr will be nothing but dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Beta, is it fine? Girls, clear है? So Yes, this is grad u1 dot dr.
सो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो ये क्या बन गया, दिस इज डेल u1 ओवर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल u2 ओवर डेल y इंटू डी वाई प्लस डेल u3 डेल y डेल u3 डेल z dz. सो ये टोटल डेरिवेटिव ऑफ u1 नहीं बन गया, दिस इज नॉट, प्लीज दिस इज नॉट u1 u2, दिस इज ऑल u1, दिस इज ऑल u1, this is all u1. So you see del u1 by del x into dx plus del u1 by del y into dy plus del u1 by del z into dz. This is nothing but total derivative of u1. अगर टोटल u1 was function of x y z, तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ u1 निकालती तो क्या आ जाता, del u1 by del x into dx plus del u1 over del y into dy plus del u1 into del over del z into dz. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Right, so you see this is nothing but du1, this is nothing but du1. तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Is it fine? और दूसरा अगर हम देखें, what we can do is we can multiply the above equation with del dot u1, so we get this equation. But now if you see this is du1, but now if you see here it is du1 एंड यहाँ पे तो du1 ये आ रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास du2 भी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास du3 भी आ रहा है, राइट? सो इट मींस व्हाट, सिर्फ यहाँ पे du1 है तो कैन आई से दैट दिस एंड दिस इज 1, सो दिस वैल्यू हैज टू बी 1 एंड दिस वैल्यू हैज टू बी 0, तभी दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होंगी. बच्चे क्लियर है? Yes, ma'am. राइट दूसरा यहाँ पे जस्ट एक रेक्टिफाई करे ना, मैंने उस टाइम नोट नहीं किया ऊपर, यहाँ पे वेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वी नीड नॉट राइट आई कैप जे कैप एंड जेड कैप बिकॉज वो आर वेक्टर को ब्रेक नहीं कर रहा है, ही इज कंसिडरिंग द आर वेक्टर डायरेक्टली. सो इन जनरल अगर मैं आर वेक्टर का डेरिवेटिव लूंगी तो दिस इज डेल आर बाय डेल u1 इंटू डी u1 डेल आर बाय डेल u2 इंटू डी u2. सो इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं हम, वी आर नॉट टेकिंग इसका, हम फाई के टर्म्स में डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं. इन जनरल आर इज सम फंक्शन ऑफ u1 u2 u3, सो व्हाट विल बी dr विल बी डेल आर बाय del u1 into du1 del r by del u2 into du2 del r by del u3 into du3. अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, del u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, सो दिस इज del u1 डॉट dr और यहाँ पे भी क्या आ गया, del u1 डॉट दिस del u1 डॉट दिस del u1 डॉट दिस. अब ये साइड हमने शो कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट du1, बट राइट हैंड साइड में तो du2 du3 भी आ रहा है, तो इट मींस उनके कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए. सो del u1 डॉट del r by del u2 इज 0, del u1 डॉट del r by del u3 इज 0 एंड राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में du1 का कोफिशिएंट 1 है, तो del u1 डॉट del r by del u1 शुड बी 1. बेटा इज इट फाइन? गर्ल्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. राइट. सिमिलरली अगर मैं u2 के टर्म्स में लिखती तो मुझे ये ओकेशंस मिल जाती, सेम वे में u3 में ये मिल जाती. सो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता, ये भी 1 होगा, सॉरी दिस इज 1, इधर से दिस इज 1 और बाकी सब 0 है, राइट? तो अगर आप देखो del u1 by del r u1, इसका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 1 है बट इसका डॉट प्रोडक्ट बाकियों के साथ 0 है. सिमिलरली u2 का u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, u2 का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ 1 है, u3 के साथ 0 है, u3 का u1 के साथ 0 है, u3 का u2 के साथ 0 है, u3 का u3 के साथ 1 है. सो यहाँ से क्या आ गया, दैट del r by del u1 del r by del u2 del r by del u3 and the normal vectors, grade vectors, they are all forming the reciprocal system. Is it clear? Yes, ma'am. By using the definition of the reciprocal system, since these systems they are forming the reciprocal system, तो हमें पता है we can write them in terms of each other. So these are the reciprocal systems. So it means del u1 कितना हो जाएगा, what is del u1? del अगर आपको याद हो, अगर दो systems हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, if they are reciprocal system then a2 can be written as what, a1 cross sorry not a1 b1 cross c1 over scalar product of a1 b1 c1. Similarly b2 कितना हो जाएगा, a1 cross c1 उसको छोड़ देना है, b1 को छोड़ देना है, a1 b1 c1 and so on. So here if you see gradient of u1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट u1 वाले वेक्टर को छोड़ दिया, del r by del u2 cross del r by del u3 over scalar product of del r u1 del r u2 del r u3. बेटा is it fine? Yes, ma'am. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ E1 और H1 लिखूं, अगर आप del r by del U1 हमने लिखा था, दैट वाज नथिंग बट H1 into E1 कैप.
तो हमने वैल्यू डाल दी। अब सिमिलरली डेल आर बाय डेल यू टू कितना हो जाएगा, H2 इंटू E2 कैप, इधर क्या आ जाएगा H3 इंटू E3 कैप, और नीचे क्या आ जाएगा H1 E1 H2 E2 H3 E3। अब अगर हम पहले डिनोमिनेटर की बात करें तो H1 H2 H3 कांस्टेंट है, बाहर आ गए, ऊपर भी H2 H3 कांस्टेंट है, बाहर आ गए, ऊपर क्या बच गया E2 क्रॉस E3, और नीचे क्या बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ E1 E2 E3। तो अगर मैं ऐसे करूं, so you see E2 cross E3, E2 cross E3 will be how much, E1 cap, or what is scalar triple product of E1 E2 E3, this is E1 A cross, scalar triple product क्या होता है, A dot B cross C, so A is E1, B cross C is E2 cross E3। now what is E2 cross E3, what is E2 cross E3, कितना होता है, what is E2 cross E3 कितना होगा, IJ की फॉर्म में देखो, मैंने ये फिगर बनाई भी हुई है। What will, from this figure, what will be E2 cross E3? What will be cross product of E2 and E3? E1. E1. So you see, this is E1. So E2 cross E3 is E1. And what is E1 dot E1? 1. 1. So you see, नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 बन गया, H1 H2 H3 रह गया, ऊपर भी H2 H3 है, H2 H3 कैंसिल हो गया, so what we get, E1 cap over H1. So delta U1 is nothing but E1 cap over H1. तो यहाँ से क्या आ गया, E1 cap is equal to H into delta of U1. So this is the relationship between E1 and delta U1. Similarly, E2 cap कितना हो जाएगा, H2 into delta U2, and E3 cap कितना हो जाएगा, H3 into delta E3. बेटा, is it fine? Yes, ma'am. Right. So what I'll do, I'll just stop here. So just revise this one. So we'll continue with the article 6. Is it fine?